आज हम रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे। हमारा टॉपिक है साइंस फेयर। योर स्कूल अरेंज अ साइंस फेयर, प्रिपेयर द ब्रीफ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, venue of exhibition, duration of exhibition, opening ceremony by chief guest, aim of the science exhibition, various project by student, एंड लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, इनोवेशन अनविल, सेलिब्रेशन ऑफ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। उसके बाद हम वेन्यू लिखेंगे, नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल ऑडिटोरियम, द साइंस फेयर स्पेंड 2 days फ्रॉम 20 सितंबर टू 22 सितंबर 2024। यहाँ पे हम वेन्यू भी लिख दिया और ड्यूरेशन भी लिखा है। नेक्स्ट हम लिखेंगे ओपनिंग सेरेमनी बाय चीफ गेस्ट। द इवेंट comment with an inspiring opening ceremony featuring the word encouragement from the school principal, followed by the ribbon cutting ceremony by symbolizing a unveiling of creativity and scientific exploration। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है वेरियस प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट। Student showcase a diverse arrange a project ranging from innovation solution of the environmental issues of cutting edges advancement in technology. Notable project included a sustainable energy model, a biodegradable packaging solution, and robotic project designed by the student। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे, द साइंस फेयर प्रूव टू बी अ resounding success, highlighting the immense potential creativity of our student. It fosters a spirit of inquiry, collaboration, and critical thinking. The project not only impressed the judging panel but also inspired fellow students to delve into the world of science and innovation. Event of concluded with a sense of the pride of accomplishment, leaving a lasting impact on the school community। तो इस तरह से हमने रिपोर्ट राइटिंग लिखा है।